Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our lecture number 3 from the chapter Triangles in 9th class mathematics. And our today's topic is congruence and properties of triangles. In previous lecture, that was lecture number 2, we discussed about the term congruence. Let's rewind a little bit. What do we mean by congruence? Congruence means the figures having same shape and size. Congruence कहते हैं जब हमारे पास फिगर्स हो और उन फिगर्स में सेम शेप और साइज हो. जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक एग्जांपल दी थी. हमारे पास एक ब्लैक कलर ट्रायंगल था, फिर हमने एक ग्रीन कलर ट्रायंगल लाया. तो हमने क्या किया कि हमने ग्रीन कलर्ड ट्रायंगल जो है वो हमने ब्लू या हम कहेंगे ब्लैक कलर्ड ट्रायंगल के ऊपर रख दिया. तो इससे क्या होता है कि जो ग्रीन कलर्ड ट्रायंगल है वो ब्लैक कलर्ड ट्रायंगल को कवर कर रहा है. देखिए, ब्लैक कलर्ड ट्रायंगल को कवर कर रहा है. तो since this green colored triangle is covering the black colored triangle exactly, that means they have similar shape and size. Or we can say, if we put the blue color or black colored triangle on the green colored triangle, then it covers it exactly. That means both these triangles, that is black colored triangle and green colored triangle, they are exactly covering each other. Means they have similar shape, they have same shape and size. Hence these two triangles are said to have congruence. तो हम इन दोनों triangles में कहेंगे कि इनमें congruence है या ये दोनों triangles आपस में congruent है. ओके, तो कौन सा रूल है जिसकी तरफ हम देखेंगे ताकि हम कह सकें कि जो हमारी ट्रायंगल्स है वो उनमें कॉन्ग्रुएंस है या वो कॉन्ग्रुएंट है. अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स हैं, तो हमारे पास कौन सा रूल है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि द गिवन टू ट्रायंगल्स आर congruent. Yes, we do have rules. We have to follow these rules. First rule is SAS, that means side angle side. उसके बारे में आपको मैंने कहा पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में. उसके बाद साइड उसके बारे में भी हमने बात की. एंगल साइड एंगल, उसके बारे में भी हमने बात की. फिर एंगल साइड, उसके बारे में भी हमने बात की. और जो 5वां है RHS, उसमें थोड़ा सा हमारा रह गया था RHS में. तो उसी की बात हम थोड़ी बहुत यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, RHS की बात करते हैं. RHS की बात करेंगे. सो we should know the full form of RHS. It means right angle. R means right angle, H means hypotenuse, and S means side. Suppose we have a triangle here. One of the triangle is here. And another triangle is here. Suppose we name it as A, B, C, and this triangle as P, Q, R. Now we have to observe, we have to see whether these two triangles are congruent or not, and we will try to use this rule
if this rule applies to these triangles, then these two triangles are congruent by RHS criterion. Let us see. This angle, that is angle B, is equal to angle Q. Both are 90 degree, means right angle. One angle of each triangle is 90 degree. Okay, and also this hypotenuse, these are also equal. That means AC is equal to PR. And also the base of this right angle triangle, say BC, is equal to base of this triangle, that's QR. If BC is equal to QR, then these two triangles are congruent because of a right angle, hypotenuse, and side. A right angle, hypotenuse, and side. This criterion is applying to these two triangles, and so you can say triangle ABC is congruent. This is the sign of congruence. So triangle ABC is congruent to triangle PQR. Why? Because of RHS criterion. Because of RHS criterion, or it is also a theorem. It needs proof. RHS is not only a criterion, it is not only a rule, but it's also a theorem, hence it needs proof. Okay, so we have talked about SAS rule. Okay, then we had SSS rule, we had side angle rule, we had angle side rule, and lastly we have RHS rule, RHS criterion. First one is an axiom, first rule is an axiom, and the remaining four, these are theorems and they need proof. These need proof because these are theorems. We will try to prove these theorems, but before proving them as theorems, we will try to have a look at the properties of triangles. In previous lecture, that was our lines and angles, we discussed some properties of triangles. If you remember correctly, one of the properties of triangles was that sum of three angles of a triangle is 180 degree. We proved that sum of three angles of a triangle is 180 degree. Another property of triangle was that exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. Definitely. Now we have another property of a triangle, that is angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides of a triangle angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle
are equal. Let's try to understand this statement. This is one of the properties of triangles. Let us try to understand this property. Okay, we have a triangle, say triangle A, B, C. Suppose AB is equal to AC. These are the two sides of the triangle and these are equal. That means it is an isosceles triangle. We have already discussed about that. If two sides of a triangle are equal, then that triangle is an isosceles triangle. So this statement is talking about the isosceles triangle or isosceles triangle. Angles opposite to equal sides. These are the equal sides and the opposite angles to them. AB has an opposite angle as angle C. AB's opposite angle is angle C, and AC side's opposite angle is angle B. We have to prove that angle C is equal to angle B. If sides are equal, if two sides of a triangle are equal, we have to prove that angles opposite to them are also equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. तो चलिए हम कैसे देखते हैं कि ये एंगल्स आपस में बराबर हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. पहले हमें इसमें गिवन लिखना होगा. ये हमारे पास थ्योरम है जिसको हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज ए थ्योरम और ये पहली थ्योरम है. तो इसको हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास दो साइड्स बराबर है, ट्रायंगल के दो साइड्स अगर बराबर हैं, उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं. इसको हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ए ट्रायंगल. हमारे पास एक ट्रायंगल है. चलिए इसका नाम रखते हैं ए बी सी. ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच इसमें क्या है कि दो साइड्स आपस में बराबर है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ओके. प्रूव हमें क्या करना है कि जो इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो आपस में बराबर है. दैट मीन्स एंगल पी इज इक्वल टू एंगल C. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो प्रूफ देने से पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे. हम एक एंगल बाइसेक्टर यहां पे डालेंगे. तो इसका नाम रखते हैं यहाँ पे डी. पॉइंट डी. तो हम एक लाइन सेगमेंट एक डालेंगे ए डी जो कि बाइसेक्टर होगा एंगल ए का. यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो एंगल बाइसेक्टर होगा. ए डी विल बी एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. तो हम क्या करेंगे. ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर. नाम क्या है एंगल बाइसेक्टर का. ए डी.
Draw an angle bisector AD of angle A A. Draw an angle bisector AD of angle A. तो हमने AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर डाला एंगल A का, और उसके बाद हम देंगे प्रूफ। चलिए जी, प्रूफ क्या हम देंगे? हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक तो ट्रायंगल ABD और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ADC। दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, एक तो लेंगे ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल हमने लिया ABD, दूसरा हम लेंगे ट्रायंगल ACD। ACD, तो हमने दो ट्रायंगल ली ABD और ACD। चलिए हम इनमें देखते हैं कि इनमें क्या कुछ कॉमन है, क्या एक जैसा है इनमें। तो अगर हम देखेंगे इन दो ट्रायंगल्स में छोटी जो ट्रायंगलें बनी हैं, तो AB तो AC के बराबर है, isn't it? इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AC के बराबर है, वो तो गिवन है, AB इक्वल टू AC, वो तो गिवन है। ओके, उसके बाद चूंकि जो AD है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट मीन्स टू इक्वल एंगल्स आर फॉर्म्ड। ये जो एंगल्स आपस में बने हैं ये आपस में बराबर है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, यानी ये एंगल CAD, ये पहला गिवन था, पहला तो गिवन था, और ये थ्रू कंस्ट्रक्शन बन गया है ना। कंस्ट्रक्शन की वजह से ये दोनों एंगल आपस में बराबर है थ्रू कंस्ट्रक्शन के जरिए ये दो एंगल आपस में बराबर है। और फिर हमारे पास AD दोनों ट्रायंगलों का हिस्सा है, AD इसको AD is equal to AD. Why? Because this is common. Now if we see, this is side, AB is side, and this angle BAD, this is an angle, and AD is another side. So we have a criterion, we have got a rule, that is side, angle, side. If we see this triangle, we also have side, angle, side, and that is an axiom. SAS is an axiom. It doesn't need any proof. SAS is an axiom. It doesn't need any proof. So if this axiom is applied here, then we have two triangles congruent. These two triangles are then congruent by SAS congruence. Okay. By SAS congruence. By SAS congruence. By SAS congruence, triangle ABD is congruent to triangle ACD. These two triangles ABD and ACD, these two triangles are congruent.
Therefore, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो बाकी जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल का एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल सी, इस ट्रायंगल का यहाँ पे एंगल ए डी बी यानी ये एंगल, और इस ट्रायंगल का एंगल ए डी सी, ये आपस में बराबर है. Angle B will be equal to angle C because of CPCT. That means corresponding parts of congruent triangles. जो triangles आपस में congruent है, उनके जो corresponding angles हैं, उनके जो corresponding sides हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं. हम ये कह सकते हैं angle B is equal to angle C, और BD is equal to DC, और angle ADB is equal to angle ADC. Because of CPCT, corresponding parts of congruent triangle. तो हम कह सकते हैं एंगल B is equal to angle C. एंगल B is equal to angle C, CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Okay? तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को, इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव भी किया. तो इसको भी हम अब अप्लाई कर सकते हैं. जो भी हमारे पास थ्योरम है उसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं. कौन सी? कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर दो साइड्स उसके बराबर हैं, तो उसके जो उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में बराबर है. तो इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को भी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी जो आगे थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करने के लिए. एक चीज़ हमारे पास है ऐसे एस एक्शम, और दूसरी हमारे पास अब ये थ्योरम है. इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं और बाकी थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया.